Hello students, welcome back to our e-class of St. Joseph's Academy, class 1, subject mathematics, and the topic we are going to study today is revision 5. Students, we will be studying revision number 5. We have done 4 revisions till now, and till now we have covered till page number 6. And we have also covered the topic before, after and between. In our previous class, we discussed before, after and between, the meaning of before, after and between, how to write before, after and between in our worksheet. We did 2 worksheets in our previous class. So today we will be moving ahead with our today's topic. Let us now discuss yesterday's class first, and then we will have a look at today's revision. I am Anukriti Gupta, your mathematics teacher, will be guiding you for today's class now. So let us have a quick revision of what we studied in our previous class. Students, in our previous class, this is our worksheet for before and after. So the number for before and after. Before means one less than the number given. After means one more than the number given. मतलब कि बिफोर में आपका एक नंबर कम होता है और आफ्टर में आपका एक नंबर ज़्यादा होता है जो नंबर दिया हुआ होता है उससे. राइट. सो हियर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 22 एज अवर नंबर. हमारे पास 22 नंबर है हमारे पास. सो इसका बिफोर क्या होगा? बिफोर विल बी 21. वाई? बिकॉज वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 22. 22 में से 1 माइनस करेंगे, वी विल हैव 21. Then after में क्या होगा? When we will add 1 to 22, we will have 23. So that will be our after number. Before and after. Before means पहले वाला, after means बाद वाला. Right? Now let's have a look at the worksheet for between. So here is the worksheet for between. You can see 33-34. Between is the number in which we have a number which is one more than the before number and one less than the after number, which means before से एक नंबर ज़्यादा होगा और after से एक नंबर कम होगा, वो between में होगा. Between means a number which lies in between the two numbers. जो दो नंबर के बीच में lie करता है वो नंबर between में कहलाता है. So this is between. 33-34. So what will come in between? Sorry, 33-35. So what will come in between? 34, which is one less than 35 and which is one more than 33. Next is 12-14. Our answer will be 13 because 13 is one greater than 12, one more than 12 and one less than 14. 14 से एक नंबर कम है और 12 से एक नंबर ज़्यादा है. So we will have 13 here as our answer. So I hope this is now clear to you, and we did it in our previous class. If you want more explanation and if you want deep meaning of before, after and between, you can visit yesterday's class or yesterday's video. Let us now begin with our today's topic. So for today's revision, we will be revising comparing numbers. So what are comparing numbers? What is the use of comparing numbers, and how do we compare numbers in mathematics? What are the signs we will be using? We will be discussing all of these together now. So what do we mean by comparing, or how do we compare numbers? In mathematics, numbers are being compared on the basis of their values, the place values
जो उनकी प्लेस वैल्यूज होती है, जो उनकी वैल्यूज होती है, उससे हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को। वंस पे, टेंस पे, हंड्रेड्स पे नंबर्स हम देखते हैं एंड वी कंपेयर like that. But if number have same values like ones or tens दोनों numbers में है, if a number is having 0 at one's place and another number is also having 0 at one's place, then at tens place they are having different numbers, then how will we compare? So that is what we will be learning now. Let's discuss all the questions together now. What will be the answers and what are the consequences and what is the result of revision? So answer to all the questions is, when we put two numbers side by side to see which is smaller or larger, it is known as comparing numbers. So जब हम दो numbers side side रखते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा वाला छोटा है, which one is smaller, और कौन सा वाला बड़ा है, which one is larger, इट इज नोन एज कंपेयरिंग नंबर्स. उसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स को एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. व्हेन वी पुट टू नंबर्स साइड बाय साइड, जब हम कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं ऑफ योर चॉइस और फॉर द गिवन क्वेश्चन, व्हेन वी पुट देम साइड बाय साइड टू सी विच वन इज स्मॉलर और लार्जर, कौन सा छोटा है या बड़ा है, इट इज नोन एज कंपेयरिंग नंबर्स. वो कहलाता है कंपेयरिंग नंबर्स. The first number can be either larger, smaller or equal to the second number. जो first number होगा वो या तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर equal हो सकता है second number के. जैसे कि आपका first number है 3 और second number आपका है 13, तो 3 जो है बड़ा नहीं है 13 से, but it is definitely smaller. So we have smaller number. इक्वल टू तब लगाते हैं हम साइन भी, और हम तब यूज करते हैं इक्वल टू को जब बोथ द नंबर्स आर इक्वल. व्हेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल, जब दोनों नंबर सेम होते हैं और इक्वल होते हैं. जैसे कि मेरा फर्स्ट नंबर 13 है और सेकंड नंबर भी 13 है, देन आई विल बी पुटिंग इक्वल टू साइन. हम इक्वल टू साइन उसमें पुट कर देंगे बिकॉज बोथ द नंबर्स हैव सेम वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू और दोनों सेम नंबर्स हैं. It is donated by the sign. You can see on the screen we have three signs, which is greater than, smaller than or equal to. These are the three signs. ये three signs हैं. ये जो sign होता है इसमें जो आप देख सकते हो एक साइड ओपन है, we call it as crocodile's mouth. तो crocodile का जो mouth होता है वो उस तरफ ओपन होता है जो साइड बड़ी होती है. सो क्रोकोडाइल यूजुअली ईट्स अप द लार्जर नंबर. जो बड़ा नंबर होता है उसको क्रोकोडाइल खा लेता है. सो दैट इज वी कॉल एट दैट इज हाउ वी कॉल एट द क्रोकोडाइल फॉर्मूला. जो जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल फॉर्मूला की तरह, जो बिगर नंबर होगा वो क्रोकोडाइल खा जाएगा, तो उस तरफ माउथ उसका ओपन होगा. सो दिस इज द इक्वल टू साइन. जब दोनों नंबर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है, तो हम ये वाला साइन पुट करते हैं. दिस इज द इक्वल टू साइन, राइट. नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू. ये हमारे साइंस जो हैं ग्रेटर देन के हैं, स्मॉलर देन के और इक्वल टू के. दीज आर द नेम्स ऑफ द साइंस. दैट्स इट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट the crocodile's mouth, and let's have a look at the sign in larger format, and then we will be discussing the exercise of the same. So explanation part, you see this is the bigger part. In both the signs you can see this is the bigger part. ये बिगर है. दिस इज आवर साइन. ये हमारा साइन है. सो सिमिलरली क्रोकोडाइल का माउथ होता है जैसे वो ओपन करता है. सो दिस इज द बिगर पार्ट. अगर यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ 13 लिखा है तो क्रोकोडाइल टर्न करके इधर 13 को खाएगा बिकॉज इट इज द बिगर नंबर. जो बिगर नंबर होता है वो उसको ईट अप कर लेता है, खा लेता है. सो द माउथ ऑलवेज ओपन्स ऑन द साइड विच इज बिगर. जो साइड बड़ी होती है उस साइड पे दिस साइन ओपन्स. So you can see the difference between the both. There is no difference. It is closed from the side which is smaller and it is open from the side which is bigger. You can see it is also written big. Means the number which is bigger
this open sign should face that bigger number. Bigger number की तरफ वो open वाला sign होना चाहिए. Right? Now let us have a look at our exercise now, which is comparing numbers. Now this is our exercise. We can see compare the numbers by using greater than, smaller than or equal to sign. So one side it is written 11 and on the other side it is written 20. So which number is greater? Evaluate both the numbers. 11 is greater or 20 is greater. कौन सा sign बड़ा, कौन सा number बड़ा है? So yes, 20 is greater. So our mouth will be open on this side, right side. जो mouth होगा वो right side open होगा. Sign हमारा ऐसे आएगा. Right? You can see the laser pointer. Okay. Next thing we have 19-18. 19-18 है. So जो number बड़ा है उस तरफ mouth open हो जाएगा. So here 19 के तरफ mouth open रहेगा because it is the larger number. वो बड़ा number है. Similarly, you will be doing all the questions since it is a revision. So I will not be discussing all the questions now. After we are done with the class, tomorrow I will be discussing the answers in my quick revision. But for now, you will be doing the exercise or you will be doing the questions by yourself. One question I would like to discuss is this part you can see on the screen 10-10. So you can see both the number are same. They have same values also. So 10-10. Since they are equal, so we will write equal to sign here. We will put equal to sign. यहाँ पे आपका equal to का sign आ जाएगा because both the numbers are same and both the numbers are equal. Right? So you will be solving this worksheet in your mathematics copy. Please solve all the parts in your copies because it is very important to practice. And if you face any difficulty, please reach out to your mathematics teachers, or you can also comment in the you can also write it down in the comment section. वहाँ पे आप लिख सकते हैं what is your problem or what is your query. So we will be resolving the query in our next class. Let's move on to the next part, which is your homework. Now, what we have for homework, I have already mentioned the homework that you have to do the worksheet in your copy. Solve the worksheet given in the video. You have to solve that worksheet in your copy. If you are not having your mathematics copies with you, you can solve it anywhere in your rough copies, but do solve it before our next class. This is your homework. Before our next class, you have to solve it anyhow. Okay. Thank you for listening to me very carefully. Have a nice day.